मार्घेरिटा में किडनी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने की 4 आरोपी गिरफ्तार। আমি এইবিলাক মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনি মেলি তাৰপাছত আমি ইয়াত আহিছিলোঁ। এইটো শংকৰে ছেকেণ্ডাৰী ছমাহত লৈছে চাগে কৰিছে বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া কামত যাওঁ বুলিহে কৈছিলে, কামত যাম বুলিহে কৈছিলে। তেতিয়া এনেকৈ নাকি আমাৰ বৰদিনাকে টমটম চলাই সিয়ে মানে কেইবাজনৰ মুখৰ পৰা শুনি মেলি ঘৰলৈ গৈ পিনে কৈছিলে যে মানে কি যাৰ লগত গৈছে সিহঁতি কিবা বেয়া কামলৈ গৈছে বুলি তাক লৈ কিনে গৈছে মিছা কথা কৈ পিনে। असम के तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा क्षेत्र से मानव अंग तस्करी से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कथित किडनी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मार्घेरिटा 1 नंबर माकुम पथार निवासी मोजाकिर हुसैन, मार्घेरिटा विनर मिल निवासी शंकर सांताना, डिब्रूगढ़ पलटन बाजार निवासी समीर पाल और गोपाल रॉय के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गिरोह गरीब और भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। पहले उन्हें घुमाने या काम दिलाने के बहाने बाहर ले जाया जाता था, फिर चालाकी से उनका किडनी निकालने की साजिश रची जाती थी। बताया जा रहा है कि बीते दिन भी मार्घेरिटा के एक व्यक्ति को लालच देकर डिब्रूगढ़ ले जाया गया था, जहां उसका किडनी निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान मामला खुल गया और पीड़ित व्यक्ति ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पीड़ित की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि किस तरह गरीब लोगों को निशाना बनाकर इस तरह का घिनौना कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुट गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। আমি গম পোৱা মতে কালি প্ৰায় 5:30 বজাত ৰাতিপুৱা মোৰ পূজা যোৱাই এইভাগৰ মানুহজনক এই শংকৰ নামৰ এই শৰ্মাহঁতৰ ওচৰৰ ল'ৰা এজনে লৈ গৈছিলে ক'ৰবাত কাম দিম বুলি, ডিব্ৰুগড় নে গুৱাহাটী বুলি কৈছিলে। তো নি তেওঁক জবৰদস্তিকে মানে মানুহ কেইজনমান লগ কৰাই কিনি কৈছে যে এনেকৈ কিডনী মানে বিক্ৰী কৰিম বুলি জবৰদস্তি কৰি তেওঁক টানা আজোৰা কৰিছিলে বোলে। তাৰপিছত আমি গম পাই কিনি যে মানুহজন মানে সন্ধানহীন হৈ আছে। এই আহি কিনি থানাত আহি কিনি এনেকৈ কমপ্লেইন কৰিলে, মোক খুব মাতিলে, মই আহিলোঁ। এজাৰ এখন যেতিয়া দিলোঁ তেতিয়া মানে ফোন কৰিছিলোঁ জোৱাইলে, তেওঁৰ ফোনটো নালাগিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই ল'ৰাটোৰ পৰা শংকৰৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিলোঁ, বিচাৰি কিনি তাক ফোন কৰিলোঁ। সি মোক মানে গাড়ী গ্লাছ দিয়ে, দি মেলি মোক কয় যে সি নাই, সি ৰাতিপুৱাই মোৰ লগত আহিছিলে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা সি ক'বলৈ গুচি গ'ল, মই তিনিচুকীয়াত থাকি গ'লোঁ বুলি ক'লে। তো এনেকৈ কৰি আমি তেওঁৰ নাম্বাৰ সৈতে মানে ইয়াত থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। তাৰপৰা থানাই আজি তেওঁলোকক ধৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক'ৰ পৰা ধৰিলে? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বুলি কোৱা শুনিছোঁ। এটাৰ পৰা সেই শংকৰ বোলাজনৰ সি আগতে কিডনী বিক্ৰী কৰি আহিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। তাৰো পেটটো ফলা আছে দেখা মতে, এনেকৈ গম পোৱা গৈছে।